Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Friday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित है बाजार विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Retail inflation eases to 4.7% in April. The index of industrial production grows 1.1% in March this year. Key domestic indices log minor gains. Sensex closes above 62,000 mark. Nifty settles above 18,300 level. And Brent crude oil trades at $75.21 per barrel. अप्रैल 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति कम होकर 4.7% हुई दर्ज। देश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इस वर्ष मार्च में 1.1% की वृद्धि में रहा। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक मामूली बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 62,000 के ऊपर पहुंचा। निफ्टी 18,300 के स्तर को पार कर गया और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $75.21 प्रति बैरल के करीब था। In our top stories, retail inflation based on the consumer price index eased to 4.7% in April this year. As per the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today, inflation dropped to an 18-month low in April. Rural inflation in April stood at 4.68%, while urban inflation was at 4.85%. Industrial output of the country in March 2023 rose 1.1%. As per the data from the Ministry of Statistics released today, the index of industrial production IIP expanded as manufacturing sector's output increased 0.5% in March and mining output rose 6.8%. Power generation declined 1.6% during the month under review. Factory output measured in terms of the index of industrial production grew 2.2% in March. Puneet, once again, good to have you on Market Mantra. Thank you, Arjun. Puneet, we have two sets of data. One is on retail inflation, CPI data, 4.7% for April, and the other is the IIP data, the factory output data, which is at 1.1% for March. What's your take on these figures? Are you encouraged by what you are seeing? So, Arjun, I would say I have mixed feelings after the data. Of course, I feel much happier with the fact that inflation is now down to 4.7%, which is a very important figure because manufacturing or industrial production will actually lag or will follow the inflation data in some way. So I'm quite glad that inflation is trending lower and getting closer to this target of 4% that we want. So I think that's very positive. Industrial production grew only by about 1.1%, largely because two important components of IIP, basically manufacturing, which is 75% of the IIP. Manufacturing grew modestly, 0.5%, and electricity after a very long period of time, electricity was down by about 2%. That also related to weather at that time. So clearly, I think there's much to cheer about as far as inflation data is concerned, and we need to be somewhat cautious about industrial production data. But overall, I would say this is good news for the economy.
तो पुनीत, आप क्या कहेंगे जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके लिए जो एक कहें कि उधेड़बुन है वो ज्यादा गंभीर हो जाएगी कि जो ग्रोथ फिगर्स हैं, आईआईपी के जो फिगर्स आए हैं उन पर ध्यान देते हुए क्या फैसला उनका कुछ बदल सकता है, जो उन्होंने पॉज दिया है अपने इंटरेस्ट रेट के बढ़ोतरी में? या आपको लगता है कि दोनों फिगर्स देखते हुए आरबीआई के लिए फैसला ज्यादा आसान होगा? मैं बिल्कुल यही कहने वाला था कि मुझे लगता है कि आरबीआई के लिए अगला फैसला जो 6 और 8 जून को जो अब आरबीआई की मीटिंग होनी है 2 महीने बाद, वो बड़ा आसान हो गया है क्योंकि ये बात साफ है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को गति देने की जरूरत है। दोनों ही सिचुएशंस में आरबीआई को मॉनेटरी स्टैंस जो है वो अपना थोड़ा ईज करना चाहिए। हालांकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, बिकॉज वहां वो जो अचीवमेंट है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की वो नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि वो अपना इन्फ्लेशन रेट तो यही रखेंगे, लेकिन मॉनेटरी जो ईजिंग है, लिक्विडिटी जो है वो थोड़ी सी उसको ईज कर सकते हैं, थोड़ा आसान कर सकते हैं, और जिससे कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको उससे मदद मिलेगी, कंजम्पशन को भी मदद मिलेगी। तो डेफिनेटली आरबीआई के लिए मुझे लगता है कि अब आसान है ये फैसला करना कि पॉज वो कंटिन्यू करेंगे और लिक्विडिटी को थोड़ा सा ईज करेंगे। पुनीत, अगर हम जीएसटी की फिगर्स देखें, वो 1.8 लाख करोड़ को क्रॉस कर गई हैं। उसको देखते हुए किस तरह से हम तालमेल बैठाएं? ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आउटपुट का जो फिगर्स आए हैं, क्या ये एक सीजनल ब्लिप भी हो सकता है? देखिए, एक तो 2 चीजें हैं। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा हमारे पास आया है ये मार्च के महीने का है, और जो जीएसटी की फिगर्स अगर हम देख रहे हैं जो 1.9 लाख करोड़ की, वो अप्रैल के महीने की थी। तो थोड़ा वो दोनों अलग अलग महीनों की हम बात कर रहे हैं। उसके बावजूद भी यू आर राइट कि मार्च के महीने में भी जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छी थी, जबकि इंडस्ट्रियल डेटा उतना अच्छा नहीं आया। और एक सीधा सा मुझे लगता है पहला कारण तो ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है जीएसटी एक्ट की वो बहुत एफिशिएंट हो रही है। यानी सरकार की जो कलेक्शन है वो बहुत, क्योंकि डिजिटल मोड में हो रही है, ऑटोमेटिक उस पर हो रही है, तो मुझे लगता है कि एक तो वहां बहुत एक अच्छा ग्रोथ मिल रही है। दूसरा ये हम ध्यान रखें कि आज जो आईआईपी डेटा है ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने कहा 75% आईआईपी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिलेटेड है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेटा है। पूरे जो हम जीएसटी कलेक्शन होती है वो सर्विसेज सेक्टर से भी होती है, और हमारे जीडीपी में जो सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है वो करीब करीब 60% है। और मुझे ऐसा लगता है इन आंकड़ों को देखकर कि डेफिनेटली हम सर्विसेज की अगर बात करें तो वहां ग्रोथ बहुत बेहतर रही होगी मैन्युफैक्चरिंग से। तो ऐसा नहीं है कि जीएसटी के आंकड़े बिल्कुल अलग हैं। जीएसटी में सर्विसेज सेक्टर का भी काफी बड़ा योगदान है, तो इसलिए मुझे लगता है वो आंकड़े ठीक एक स्टोरी बता रहे हैं। Puneet, just coming back to inflation bits, because it's linked to the rate hikes pause of the central bank, there seems to be a upper tolerance limit of 6%. What is going to be the approach of RBI in terms of what the monetary policy is going to be? Because the bank rates are very high, as far as the retail consumer is concerned. And on the positive side, what we have seen is that the consumer food price index is down to 3.8% in April. How did they achieve that? So, Arjun, one thing about inflation, about interest rate cycle has been that it has been a very steep cycle. We started raising rates in May last year, May 2022, and by May this year, we have already raised rates to by 250 basis points to 6.5% now. So, I think we are already in pretty high zone as far as interest rates for the Indian economy is concerned. I think RBI will definitely pause. There is no reason why RBI should even consider any further increase in interest rates or any tightening of liquidity. Also, we know globally there is no pressure which is building up now as far as inflation is concerned. Inflation has cooled in USA and other economies also. So I think globally we know that inflation is trending lower. India is of course ahead of the cycle a little bit, which is good. So RBI's job is, I think the priority is pretty well taken care of. Second priority RBI has defined is as that of promoting growth. I think that is what we should now be focusing on. You mentioned about the food price inflation. See, that of course there is a seasonality factor which is there. We had very high inflation last year,
And therefore, because of the so-called favorable base effect, we are seeing that the inflation is lower. But in fact, the index is slightly higher by 0.5%. So two things. One is, of course, this statistical thing about high base effect, etc. Secondly, I think consumption is definitely kind of slowed down because of high interest rates. RBI will definitely support consumption initially through extra liquidity. And I think towards the end of this year, I won't be surprised if we see one or two interest rate cuts. I think we will deserve that by the end of this year. But for the time being, I think they will support consumption through easier liquidity. पुनीत, इन्फ्लेशन के ही कॉन्टेक्स्ट में जो दूसरा एक पहलू होता है फिस्कल स्टेप्स का, फिस्कल मैनेजमेंट का, जो हमने देखा चाहे वो एडिबल ऑयल्स में हो, जहां जहां भी प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट हुए वहां मैनेजमेंट की गई, प्रोडक्शन मैनेजमेंट की गई, इंपोर्ट मैनेजमेंट की गई, एक्सपोर्ट्स को कहीं कहीं रिस्ट्रिक्ट किया गया. आपको लगता है कि ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भारत में? बिल्कुल सोनू, अगर आप देखें तो जो मैनेजमेंट रहा है प्राइसेस का, मुझे लगता है वो बहुत ही बेहतर रहा है. अगर हम इसको कंपेयर करें जो यूरोप में हो रहा है, जो यूके में हो रहा है, ये बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, वहां पर तो हालात बहुत खराब है. और छोटी इकोनॉमीज की तो खैर हम बात ही क्या करें, वहां तो क्राइसिस चल रहा है. लेकिन बड़ी इकोनॉमीज में भी, अमेरिका में भी इन्फ्लेशन रेट पीक पर 8% के लिए पहुंच गया था, 9%, बल्कि 9.1 पहुंच गया था. तो भारत में कभी ऐसा क्राइसिस नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है. और आपने जो जिक्र किया, जैसे अगर हम देखें, अगर ब्रेकअप करेंगे हम इन्फ्लेशन का, फूड इन्फ्लेशन का, तो ऑयल्स, जो एडिबल ऑयल्स है, वहां पर हम देखेंगे काफी बड़ी गिरावट आई है. 6% से ज्यादा वहां पर ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है प्राइसेस में. तो और ये बहुत क्रूशल आइटम है, ये हर घर में, हर किचन में ये आइटम इस्तेमाल होता है, हर किसी के जीवन को छूता है ये आइटम. तो इसलिए मुझे लगता है कि जो क्रिटिकल आइटम्स हैं, जहां पर फूड के आइटम्स इन्वॉल्व हैं, जहां पर एक गरीब कंज्यूमर है उसके आइटम्स वहां इन्वॉल्व थे, वहां पर ज्यादा ध्यान दिया गया और वहां प्राइसेस को मेंटेन किया गया. हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज था जो फ्यूल इन्फ्लेशन था, यानी जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से जो इन्फ्लेशन होता है, सीधा भी जो एनर्जी कॉस्ट होती है और उसका इफेक्ट आता है पूरे वेजिटेबल्स पर, दूसरे आइटम्स के ऊपर. वहां भी काफी अच्छी मैनेजमेंट रही है, हमने देखा है काफी स्टेबिलिटी रही. और इनफैक्ट अब फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन जो है, दोनों ही आइटम्स वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं. तो मुझे लगता है कि एक आम आदमी को ध्यान रखते हुए इन्फ्लेशन मैनेजमेंट किया गया. आई थिंक दैट वाज अ गुड कमेंडेबल मूव. Puneet, we have two figures, rural inflation for April at 4.68%, urban inflation at 4.85%. How is this computed and how do they draw a line between the two? Arjun, see, typically, statistically, the National Samples Organization, NSO, the office which does it, they actually draw up a sample size of the consumption by a person in rural India and urban India. Say a person living in urban India will be consuming things in a different proportion. So, house rents would, for instance, would be much higher. Transportation costs will be much higher, and food items may not be that high in their consumption basket. But in rural India, the food item may be, much higher. Healthcare costs may be much higher. So the consumption baskets of a typical person, consumer in rural India and urban India, they are different. And therefore, the computation of inflation in those items is also differs. And I think it has been done very, very well statistically by the NSO and seems to give a fairly good idea of what is happening in rural India. We know that in rural India, some time back, there was a slowdown in demand. This is what FMCG companies were doing. And they were saying that there is a slight slowdown, but I think that is now being addressed and consumption is picking up rural India. So I think that is also doing fairly okay. आज की मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स पर इस चर्चा के बाद आइए चलते हैं शेयर बाजारों की ओर. वैश्विक शेयर बाजारों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक शुरुआती गिरावट से उबर गए और मामूली बढ़त पर बंद हुए. सेंसेक्स 62,000 के ऊपर जा पहुंचा और निफ्टी 18,300 के स्तर को पार कर गया. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.2% की वृद्धि से 123 अंक बढ़कर 62,028 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.1% की बढ़त से 18 अंक ऊपर 18,315 पर बंद हुआ. व्यापक बाजार की बात करें तो यहां आज गिरावट का रुख था. बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.35% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.1% की गिरावट दर्ज हुई.
Key domestic indices recovered from early losses and posted minor gains today amid mixed cues from the global share markets. BSE Sensex closed above 62,000 points, while NSE Nifty settled above 18,300 level. Sensex rose by 123 points, or 0.2% to finish at 62,028. Nifty at the National Stock Exchange climbed 18 points, or 0.1% to end at 18,315. In the broader market at the BSE, the mid-cap index fell 0.35% and the small-cap index declined 0.1%. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 19 firms rose while 11 fell. Mahindra & Mahindra was the top gainer as it surged 1.9%, followed by IndusInd Bank, which climbed 1.8%. Axis Bank gained 1.7%. On the other hand, Power Grid declined 2.8%, NTPC fell 2.35%, Ultratech Cement and Tata Steel both slipped 1.7% each. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 7 sectors posted gains while 13 suffered losses. Service sector rose 1.3%. Auto added about 1%. Bankex added 0.75%. On the other side, utilities slipped 1.85% and metal fell 1.7%. Oil and gas and power sectors both ended 1.15% down. The overall market breadth was negative as shares of 1,653 companies rose, while those of 1,865 companies fell. A total of 120 shares remained unchanged. Puneet, what's your take on the market performance today? DIIs were the net sellers, FIIs, FPIs once again the net buyers to the tune of 1,000 crore rupees. But there is also news that it was primarily B2B based, business to business based. Are we talking of private placements here? So, Arjun, as you know, that last 1.5 months, we have seen an almost relentless rise in stock indices, and we have seen more than 10% gain in Nifty and Sensex both, almost 2,000 points rise in NSE, largely aided, I would say, by huge buying by foreign investors, largely by foreign investors who have been buying constantly now in the last 30-35 days, and they have pumped in about 40 to 45,000 crore FII money into Indian stocks. Also, domestic investors were buying and domestic institutions were buying. So overall, we have seen this very sharp rise in stock indices, which is very welcome. And this is in contrast to what happened globally. Actually, globally, sentiment was, I would say, biased towards upside, but there was a lot of volatility. In India, we have seen practically no volatility during this period, which shows that the sentiment as far as Indian stock markets and Indian economy is concerned is very positive. Of course, like I mentioned, foreign investors have been big buyers, but I think it is the performance of the Indian economy, whether we look at the GST numbers which Sonu mentioned, or we look at the way the inflation has been managed, interest rates have been managed. I think that has given a lot of confidence to investors to come into India, invest here, and bid the markets higher. So I would say, okay, going forward, a little bit of caution because there may be an element of overvaluation right now. Usually that is what happens, But I think overall Indian markets have done remarkably well compared with its peers in the world. पुनीत जी, अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, कंपनी रिजल्ट्स की बात करें, तो बीच बीच में कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आई. अभी आप क्या कहेंगे, जो लास्ट क्वार्टर था, मार्च क्वार्टर, उसके रिजल्ट्स को ओवरऑल आप कैसे आंकेंगे? कौन से सेक्टर्स आपको लगता है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और कहाँ कुछ कमियां रही? देखिए, कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ कि स्टार्स कौन थे और लेगार्ड्स कौन थे, तो आप ये कह सकते हैं कि जहां थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही सेक्टर्स में, एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सर्विसेज कंपनीज में हमने देखा कि रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ी कमी आई है, और लार्जली बिकॉज वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं. ज्यादातर सर्विसेज जो एक्सपोर्ट्स है, सॉफ्टवेयर हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो एक्सपोर्ट होते हैं. तो वो सर्विसेज में थोड़ा डिक्लाइन आया है क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन है, हमें मालूम है. तो वहां हमने थोड़ा गिरावट देखी. थोड़ा हमने देखा कि जो मेटल कंपनीज है, कमोडिटी कंपनीज है, वहां पर जो स्टील प्रोड्यूस करती हैं, कॉपर प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, वहां पर हमने देखा कि वहां पर थोड़ा सा स्लो डाउन था. वहां पर ये दो सेक्टर्स खासतौर से. और तीसरा सेक्टर टू सम एक्सटेंट मैं कहूंगा कि एफएमसीजी सेक्टर था. एफएमसीजी सेक्टर में भी हमने उम्मीद से कम ग्रोथ देखी. तो इसके अलावा यदि हम देखें, जो सेक्टर्स ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है,
वो बैंकिंग सेक्टर है टॉप पर। मुझे लगता है कि जो बैंकिंग जो क्षेत्र के जो प्रॉफिट्स आए हैं वो बिटवीन 50% to 100% ग्रोथ बैंकिंग क्षेत्र में हमने देखी, विच इज रियली एक्सट्रीमली वेल। हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर के नंबर्स देखे, वो बहुत अच्छे थे, मारुति के नंबर्स बहुत अच्छे थे। आज टाटा मोटर्स के नंबर आए हैं, 5,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट डिक्लेयर किया उन्होंने एक क्वार्टर का, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा वहां टर्न अराउंड है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑटोमोबाइल्स में, बैंकिंग में, इवन फार्मास्यूटिकल्स दे डिड वेरी वेल। तो काफी वहां पर अच्छे सेक्टर्स है। ज्यादातर कंपनियां आप देखेंगे उनका जो प्रदर्शन रहा वो उम्मीद से बेहतर रहा, इवन केमिकल्स में भी। तो कमोडिटीज में एक्सेप्ट मेटल्स आई थिंक others were doing very well. Puneet, the volatility index is at 12.85%. It's down by 2.74%. If the VIX is under 13, what does this mean in terms of volumes of trade on the stock market? We're talking about the cash market here. What is the retail participation? So, Arjun, one of the more, even I am very puzzled actually, honestly. Markets, such a low VIX for such a long period of time. We have seen for last 2 months, VIX has been trending below 13, and which indicates extreme bullishness, extreme optimism, and low fear of risk. So, because VIX, as you know, is called the fear index, and if index is lower, it means the retail investors and investors in general are not fearful of a fall in the markets. So clearly, if you look at the index standalone, the VIX index at 12.85, which is much lower than the average, then I would say people are not afraid to invest in the stock markets. That is a broad message. But of course, volumes, if you see, have now started picking up. Lately, we had seen that retail investor volumes had fallen a lot. Because the markets, when they corrected in March, the retail participation went down a lot. But we've seen in April and May that has come back, and a lot of retail participation is now happening. People are very confidently investing in the markets. That is broadly the message we get from this index. पुनीत जी, आपने बैंकिंग सेक्टर का मेंशन किया था, जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स आपको लगे। उसमें अगर हम देखें तो इंटरनेशनली तो काफी एक बैंकिंग संकट फिर से उभरा यूएस में। क्या लगता है आपको, वो क्या एब्जॉर्ब कर लिया है हमारे बाजारों ने, और क्या कुछ कंटेजियन का यहाँ पर खतरा है, जैसा 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था? उसके मुकाबले आप ये जो 3-4 बैंक्स फेल हुए हैं यूएस में, उस स्थिति को कैसे देखते हैं? सोनू, देखिए, पहली बात तो ये कि अमेरिका के और भारत के जो बैंकिंग क्षेत्र है और उसकी रेगुलेशन में बहुत फर्क है। अमेरिका में बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स हैं, जो रीजनल बैंक्स, इनफैक्ट मैक्सिमम बैंकिंग जो होती है वो लोकल बैंक से होती है, और जो बैंक सिर्फ एक स्टेट में ही ऑपरेट करते हैं या एक एरिया में ऑपरेट करते हैं। और वहां पर कुछ बड़े बैंक्स हैं, 5-6 बड़े बैंक्स हैं, जेपी मॉर्गन है, गोल्डमैन सैक्स है। तो ये बैंक उतने व्यापक नहीं है। और जो हम फेलियर्स हमने देखा अमेरिका में, वो छोटे बैंक्स में, रीजनल बैंक्स में देखा, जहां कॉन्फिडेंस कम था, वहां पर रन ऑन द बैंक्स हुआ। वो बैंक्स करीब करीब फेल होने लगे, तो यूएस गवर्नमेंट ने उनको प्रोटेक्ट किया, डिपॉजिटर्स को, और उन बैंक्स को बड़े बैंकों में मर्ज कर दिया। यानी जो बड़े बैंक थे अमेरिका में वो और स्ट्रांग हो गए हैं और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। और जो छोटे बैंक्स हैं, जो अमेरिका में एक ट्रेंड रहा है, हमेशा कई दशकों से वो ट्रेंड रहा है, मुझे लगता है वो छोटे बैंक्स के लिए आने वाले समय में काफी चैलेंजेस रहेंगे अमेरिका में। भारत में ये स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि कारण क्या है कि जो बैंक्स हैं भारत में, काफी बड़ा 70% से ज्यादा बैंकिंग अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स करते हैं, यानी गवर्नमेंट ओन बैंक्स करते हैं। तो वहां कोई डर नहीं है फेलियर का या किसी प्रकार के खतरे का। जी। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, वो भी बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं भारत में, छोटे बैंक्स कम हैं भारत में, प्राइवेट बैंक्स। तो मुझे लगता है कि भारत में इसका कोई असर नहीं आएगा। आइए रुक करते हैं करेंसी बाजार का। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82 रुपये 16 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 102.12 पर था। रुक करें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का, तो अमेरिका और चीन के आर्थिक आंकड़े कमजोर रहने से वैश्विक मंदी से जुड़ी चिंताएं बढ़ जाने के बाद अधिकांश एशियाई बाजारों में आज मंदी का रुख था, और डॉलर का आकर्षण सुरक्षित निवेश के रूप में बने रहने से डॉलर में मजबूती बनी रही। हालांकि आज जापान के बाजार का प्रदर्शन उत्साहजनक रहा। कारोबार की समाप्ति पर जापान का निक्केई सूचकांक 0.9% की बढ़त में रहा। वहीं चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.15% लुढ़क गया। सिंगापुर के
स्ट्रेट्स टाइम्स और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी दोनों में 0.65% की गिरावट दर्ज हुई। हांगकांग का हैंगसेंग 0.6% के नुकसान में रहा। यूरोपीय बाजारों की बात करें तो यहां दिन के कारोबार में बढ़त का रुख था। ताजा समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 0.85% की तेजी पर था। जर्मनी के डैक्स में 0.5% की वृद्धि थी और लंदन के फुटसी में 0.3% की बढ़त थी। Moving on to the U.S. stock market, Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 ended lower yesterday, dragged down by Walt Disney as it lost its subscribers. However, Nasdaq rose due to a lift in shares of Alphabet a day after Google rolled out more artificial intelligence products to take on competition from Microsoft. Microsoft shares eased and were among the biggest negative influences on the S&P 500. Dow Jones fell 0.7% and the S&P 500 declined 0.2%. On the other hand, the Nasdaq Composite Index ended 0.2% up. Puneet, these results from the U.S. stock indices, is it a result of quarterly earnings only in terms of not just quarterly earnings but more managerial accounting figures in terms of subscriber base, etc.? Or is it because of what's happening in its macroeconomics, the debt ceiling issue right now, so that they don't default on the debt obligations? Is that a major concern, or is it just the results coming out from companies? So, Arjun, the American markets right now is really influenced by a number of factors. There are a lot of things playing out there. So there is the macroeconomic issues in terms of inflation and liquidity and what the Fed will do next. There are political issues about debt ceiling that you mentioned. There's this game about technology companies. The landscape is changing because the competition, the kind of things they're doing. And then you mentioned Disney, which is going through a very strange kind of standoff with the local government in Florida, and they're suffering a lot. So American markets are right now going through a lot of their own story, and therefore I think, of course, the influence on the other markets is also less. I think this will settle down because ultimately it is the macroeconomy which will determine what happens to the markets in America. They seem to be doing okay. I would say that they're closer to the top rather than to the bottom. And so I think they're okay. They appear to be fine right now. In more news, Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that India has been easing a lot of restrictions to facilitate businesses and ensure overall ease of doing business. Ms. Sitharaman said this while interacting with investors and business leaders at an event in Tokyo, Japan yesterday. She highlighted the Indian government's key priority to incentivize and facilitate investments of businesses in India through the Production-Linked Incentive Scheme, PLI. The minister said the scheme was initially introduced for 14 sectors and is now being expanded in areas of semiconductors and solar components. और अब चलते हैं commodities की ओर। ऑयल की स्टोरी है आपके पास? Oil prices slipped today, heading for a fourth weekly decline as renewed economic concerns in the US and China revived concern about fuel demand growth in the world's two largest oil consumers. In intraday trade, Brent crude was trading at $75.21 a barrel, while West Texas Intermediate crude price was at $71.16 per barrel when reports last came in. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाले सोने का मूल्य 261 रुपए की गिरावट से 60,631 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। जुलाई अनुबंध वाली चांदी 1,038 रुपए सस्ती होकर 72,770 रुपए प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $2,008.90 प्रति आउंस पर था। चांदी भी गिरावट दर्ज करती हुई $23.96 प्रति आउंस पर थी। और चलते चलते आपको बता दें, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी रिटर्न्स के लिए ऑटोमेटेड रिटर्न जांच मॉड्यूल तैयार किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये मॉड्यूल आंकड़ों के विश्लेषण और सिस्टम द्वारा पहचाने गए जोखिमों के आधार पर चुने गए करदाताओं के जीएसटी रिटर्न की जांच करने में अधिकारियों को सक्षम बनाएगा। ब्रीफली, आपको लगता है कि ये जो कॉन्स्टेंटली सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, उससे भी जो कलेक्शंस है वो बढ़ रही हैं? बिल्कुल सोनू, जैसे मैंने कहा कि यही एक बहुत अच्छा इफेक्टिव तरीका भी है और बहुत ज्यादा परेशान भी ये लोगों को नहीं करता। समय समाप्त हो गया है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। पुनीत जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, विभिन्न विषयों पर हमें विस्तृत जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सोनू। And before we close, a reminder of the headlines. The key domestic indices log minor gains. Sensex closes above 62,000 mark. Nifty settles above 18,300 level.
Rupee closes at 82 rupees and 16 paise against the US dollar, and Brent crude oil trades at $75.21 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.